Mohammed, I think right now I am audible or not? And सिस्टी सी यार जो प्रॉब्लम हमें आई थी कि वट एवर क्वेश्चन जो हमने सपोज किए थे वो क्वेश्चन मैं आज सर के थ्रू आपको भिजवा दूंगा. ओके, यस आई एम ऑडिबल. ओके नीलाक्षा, जस्ट डू द रिफ्रेश कर लो एक पेज को नीलाक्षा. आई थिंक देन एवरीथिंग विल बी ओके बिकॉज रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैन हियर माई वॉइस क्लियरली. ओके, तो सी हियर इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल स्टार्ट cross product. Okay guys, see here what we are going to do, we will start cross product. Okay, see here cross product. Let's start the session. This will be cross product or vector product. Cross product or vector product. Try to understand. Okay guys, now see here what is the meaning of cross product. देखो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते थे, बिकॉज वंस यू डू डॉट प्रोडक्ट बेसिकली जो तुम्हारा आउटकम है दैट कम्स आउट टू बी अ पर्टिकुलर नंबर. पर्टिकुलर नंबर का मतलब क्या हो गया, दैट कम्स आउट टू बी अ स्केलर. क्लियर गाइस, जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट वर्क. क्लियर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क इज एफ डॉट एक्स. So because it's a dot product, that's why your outcome is also a scalar quantity. Clear guys? But once we are talking about cross product, try to understand. Okay, Arjita, video is paused. What about rest of the student? Arjita, it's clear. Okay, Arjita, एक बार आप पेज को अपने रिफ्रेश कर लें. I think उसके बाद आपको क्लियर कट दिखाई देगा. For rest of the students, it's okay. ठीक है. Now see here guys, if we talk about the cross product, okay, that's good, Ansh. If we talk about cross product, तो cross product में क्या होता है, जो भी रिजल्टेंट XYZ क्वांटिटी होगी that will come out to be a vector quantity. Clear guys? Okay, I hope that's clear. So first of all, let's see the statement of cross product. Once again we have two vectors, A equals to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. Clear guys? A1, A2 और A3 क्या है, वेक्टर A के X component, Y component as well as Z component. Clear guys? Now if we talk about vector B, see here this will be B1 into I cap plus B2 into J cap plus it will be B3 into K cap. Clear? So what we are doing basically, we are taking two vectors, हम दो vectors को assume कर रहे हैं and then see here what will be the statement of cross product. See here the statement of the cross product will be like this: A cross B, this will be equals to mod A mod B multiplied by sin theta. See here, this is the statement of cross product. If we take cross product of two vectors such that A and B, then A cross B, ये कैसा दिखाई देगा? This will be equals to mod A mod B into sin theta. But see here, if you ask me whether this expression is exactly appropriate or not, I will say कि ये particular जो expression है ये 100% accurate नहीं है. Why it's not accurate? Can anyone tell me? If I simply write down A cross B equals to mod A mod B into sin theta, this statement is not 100% accurate. Can anyone tell me why? Yes, so Mushfiq, you are absolutely right because it's missing direction. Clear guys? See here, what was the statement? आपने स्टेटमेंट ये कहा कि the cross product अगर आप करते हो दो वेक्टर्स का तो जो भी आउटकम होगा that will also be a vector quantity. Clear guys? So what we have done, we have taken cross product of A cross B, that is AB sin theta. अब इधर देखो A cross B, it's a vector. But if you see in the right hand side, what does mod A represent? Mod A represents magnitude. What does mod B represent? Mod B also represents magnitude. What does sin theta represent? Sin theta also represents magnitude. So that's why magnitude into magnitude into magnitude. What is going on basically? In right hand side we are missing the direction. Okay guys, are you able to understand what I am trying to say? Okay, that's good. So okay, that's good. Okay, okay. Yes. Yeah. आर्यन सी यार, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग डायरेक्शन इसलिए मिस करते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन होती ही नहीं है. क्लियर?
सी द पॉइंट इज वी कॉल इट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती. इन द एंड व्हाट डू वी हैव, सिंपली वी हैव अ पर्टिकुलर नंबर, दैट्स ऑल. ठीक है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. लेकिन यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इफ यू आर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी तो इट मस्ट इंक्लूड डायरेक्शन. लेकिन जब मैंने बताया कि मॉड ए ये नंबर रिप्रेजेंट करता है, मॉड बी रिप्रेजेंट्स नंबर और साइन थीटा भी एक पर्टिकुलर नंबर होगा, मतलब राइट हैंड साइड में डायरेक्शन कहीं भी नहीं है. सो दैट्स वाई क्या इस एक्सप्रेशन को हम 100% राइट कहेंगे? आंसर इज नो. ओके, सी हियर गाइस. ओके, Aryan, are you able to follow me right now? Okay, for that you have to wait for a second. Just listen. Okay, what about rest of the student? Okay, see here. Just wait for. Okay. Aryan, just wait for a second. Listen, and within 5 minutes your doubt will be clear. Okay, as I can see, for rest of the students everything is clear. We can define direction here as. Okay, I will do the. I will. Yes, Aman. Okay, Shaili. Yes, clear. Okay, ठीक है. तो यहाँ पे देखो guys, what I was trying to say कि A क्रॉस B it's a direction quantity. ठीक है, और राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, ये रिप्रेजेंट करता है ओनली नंबर्स. मीन्स अगर इस एक्सप्रेशन को मुझे राइट बनाना है देन आई हैव टू डू सम चेंजेस लाइक दिस. A क्रॉस B I will write down mod A mod B multiplied by sin theta into n cap. Now try to understand. Okay, see here. A cross B equals to mod A mod B sin theta into n cap. What is n cap? Remember, this n cap is a unit vector. This n cap is a unit vector. Clear? किसकी डायरेक्शन होता है ये यूनिट वेक्टर? This unit vector is directed along the direction of A cross B. Clear guys? अब यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से समझो. n cap का मतलब क्या हुआ? Suppose if you have a number just like 5. Clear? And what I want to do, I want to make it a vector. Clear? I simply had a number, the number is 5 and I want to turn this number into a vector. So what I will do, I will simply multiply it by I cap. अब देखो I cap का मैग्नीट्यूड कितना होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ I cap इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 5. स्टिल इट्स मैग्नीट्यूड इज 5. बट व्हाट हैपेंड कि जैसे ही आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम बट द फिजिकल क्वांटिटी गेट्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. लाइक 5 I cap इज अ वेक्टर विच इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस. इन द सेम वे यहाँ पे जब आपने ईटा कैप से मल्टीप्लाई किया या एन कैप से मल्टीप्लाई किया तो what about the magnitude? The magnitude is still the same. And what is the magnitude of the cross product? The magnitude of the cross product is still AB sin theta. लेकिन ईटा कैप से मल्टीप्लाई करते ही मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम बट इसे क्या मिल गई? डायरेक्शन. क्लियर गाइस? मैग्नीट्यूड इज स्टिल द सेम बट द फिजिकल क्वांटिटी गॉट द डायरेक्शन. Okay guys, so let me know whether you are able to understand this or not. Okay, that's good. Okay guys, just copy it ASAP जितनी जल्दी से जल्दी हो सके. Okay, that's good. Aboli, okay, that's good. Okay guys, what about it? Okay, done. So I'm going to rub this final call. Is there anyone who still has any doubt in this section? Get it? Okay. Mukul, take your time, no problem at all. We have sufficient. Yes. Okay, see, it depends upon the expression Aryan. जैसे अभी मैं for example in last class what we have done is dot product. You remember I dot I equals to 1, I dot j equals to 0. In the same way in cross product also we have some rules. So as soon as कि वो rule मैं आपको बता दूंगा then everything would be clear. Okay, just as I told you, just wait for 5 to 10 minutes. Once the rules are clear, फिर ये सारी चीजें clear हो जाएंगी. Okay? Okay, Shali, done. Okay, I hope so. Everybody is done with this. What about Mukul? Are you finished? Okay, that's good. Okay, चलो भाई. अब यहाँ पे next हम लोग देखते हैं direction. What about direction? Like how to find out the direction of the cross product guys. See here. देखो. There are two possibilities. Like you will have the vectors like A cross B.
या फिर क्या हो सकता है, वेक्टर विल बी लाइक बी क्रॉस ए. क्लियर गाइस? ओके, सो सी हियर हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. ओके, suppose we have two vectors, this one is vector A and this one is my vector B. Okay, and assume this particular angle is theta. In the same way, this one is my vector A and this one is my vector B and this particular angle is theta. Okay, so see here. Guys, what do we want to find out? We want to find out the value of, not the value. Basically, we are trying to find out the value of, direction of A cross B or B cross A. Okay. तो यहाँ पे देखना ध्यान से. Suppose in this case, in first case, I want to find out what will be the direction of A cross B. This is our case number 1. And this is our case number 2. Suppose we want to find out the direction of B cross A. Okay. So we want to find out two directions A cross B as well as B cross A. अब देखो इसको find out कैसे करना है, उसका बहुत सिंपल सा मेथड है. See here. Suppose if you want to find out A cross B, तो बच्चों A cross B निकालना हो या फिर B cross A निकालना हो, the process will remain same. कैसे करना है? See here. Just put your right hand like this. ठीक है. Thumb, यहाँ पे देखो thumb और fingers, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बना लो. इस तरीके से कर लो. वो देखा ना आपका हाथ कांग्रेस के साथ, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, इट डजंट मीन कि हम लोग कांग्रेस के सपोर्टर है. इनफैक्ट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक कांग्रेस और बीजेपी. इट्स अ मेथड. जस्ट मेक योर हैंड्स लाइक दिस, है ना? क्लियर? फिर क्या करना है? द एंगल बिटवीन योर फिंगर्स एंड थंब मस्ट बी 90 डिग्री. भाई सबने इस तरीके से कर लिया? यस और नो? जल्दी बताओ फटाफट. आपका हाथ कांग्रेस के साथ. ओके, दैट्स गुड. Everybody, okay, that's nice. Good, very good, Anisha. Okay, so everybody, all the students here, I can see 56 students are there. So everybody just do it like this. Fingers और thumb. ये हो गया thumb, ये हो गया fingers. अबे fingers, thumb तो पता ही होगा तुम लोग को. Doubt है क्या इसमें किसी को? Okay. So see here, this is your fingers and this is the thumb and the angle between them is 90 degree. तो अब अपने को क्या करना है? Suppose you want to find out the direction of A cross B. So in this case what we will do, हम वेक्टर A से B की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे और जो भी थंब की डायरेक्शन होगी, the direction of thumb will give the direction of the cross product. Clear guys? See here, जैसे यहाँ पे देखो A cross B एंगल 90 डिग्री. अब A से B की तरफ कर्ल करो. Do something like this. अपनी फिंगर्स को, because we want to find out A cross B, सो फिंगर्स को ए की डायरेक्शन में लेके जाओ और बी की तरफ कर्ल करो. यू कैन सी दैट योर थंब पॉइंट्स इनसाइड द प्लेन. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके, सभी लोग करके देखो. डू इट एवरीबॉडी. ओके, सी हियर, ये 90 डिग्री बना लिया हमने. ओके, चलो यार काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा इलाज कर देता हूं. मेक इट 90 डिग्री. देन ए क्रॉस बी, ए की तरफ फिंगर्स को लेके जाओ और बी की तरफ कर्ल करो. समथिंग लाइक दिस. क्लियर? Okay, you can see that your thumb is pointing inside. Okay, just let me know that all of you are able to understand this concept. Yes, Ansh. Oh, okay, that's good. You can observe like your right hand thumb is moving inside the plane or inside the paper. Okay guys, I am just looking at your response. Okay, I hope everybody is able to understand this. ओके गाइस, दैट्स क्लियर. और ध्यान रखें, जो भी कर्लिंग करनी है वो उसी डायरेक्शन में करनी है जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स रोटेट होती हैं. क्लियर? माइनस के कैप. ओके, दैट्स राइट. सी हियर गाइस, डोंट राइट लाइक दिस. भाई साहब, जनता कृपया ध्यान दे. ए से बी की तरफ इसी तरीके से कर लोगा, इस तरीके से आप नहीं कर सकते कर. सो इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट लाइक दिस, दैट्स नॉट पॉसिबल. ओके, ठीक है. तो सभी लोगों ने करके देख लिया. सो सी हियर, यहाँ पे देखो क्या है. बेसिकली वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड दैट दिस पर्टिकुलर एक्सिस इज अवर एक्स एक्सिस और ये क्या होगी अपनी वाई एक्सिस. तो एक्स वाई इनसाइड जो डायरेक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? माइनस जे. एंड आउटसाइड जो डायरेक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्लस जे. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, इफ यू कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, योर थंब इज पॉइंटिंग इनसाइड. And what is the direction inside? Inside direction is minus z, which means direction is minus k cap.
So if I talk about A cross B, the direction of A cross B is minus B. See here. The direction of A cross B is minus K cap. And in the same way, if you talk about B cross A, see here, same rule will be applicable. क्या करेंगे? Fingers और thumb, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनाएंगे. Clear guys? And if we move our fingers from B to A, see here like this, from B to A. Now you cannot curl your fingers like this, भाई साहब, ठीक है? यार ऐसे नहीं कर सकते, हाथ टूट जाएगा तुम लोग का. Okay, am I audible? I think all of you can listen to me, right? Okay, that's good. So see here, if you want to do B cross A, यार कैसे करोगे? हमको चेंज करना पड़ेगा फिंगर्स को, and you can do it like this, ठीक है? खुद से करके देखो, अभी तुम लोग को समझ में आएगा. You don't do it like this. You cannot curl your fingers like this. हाँ, Suyash, see here, what I am trying to say guys, अगर आपको अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, तो जनरली जिस डायरेक्शन में तुम्हारी फिंगर्स मूव करती हैं, फिंगर्स को हमें उसी डायरेक्शन में मूव करना है. See, if I do B cross A like this, how is it possible? I can do it like this. पहले ऐसा था 90 डिग्री, I can do it like this, right? But I can't do it like this. So B cross A, thumb is pointing outside. So outside direction is plus Z axis. So B cross A will be directed in which direction? Plus K or plus Z direction. Okay, everybody just look at the board and let me know whether you are able to understand this or not. How we are finding? Okay, that's good, very nice. Okay, I'm just looking at the chat box. Let me know if anyone else has any problem. Okay, clear. Okay, what I can see, Disha clear, Shelly clear. Okay, okay. So for everybody, I think how to calculate the direction between two vectors is clear, guys. Okay, it's nice to see. Very good. Aboli clear, Ishka clear. Okay, nice, very nice. That's right, Arjita clear. Okay guys, final call. Is there anyone who still has any doubt like how to find out the direction of the cross product between two vectors? Okay, nobody. So I'm going to rub this. Okay guys, very nice. Good. Okay. Chalo bhai. Ab yaar next we will see the properties of the cross product. Write down next heading. Properties of cross product. Write down next heading, properties of cross product. Okay guys, write down next heading, properties of cross product. Okay, अब यहाँ पे देखो. अच्छा, एक चीज ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट इज कंपैरेटिवली इजी. अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो ये थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ जाता है, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस तनिषा, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग? ओके, ठीक है. ओके गाइस, सो सी हियर हाउ टू लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट. A cross B was equals to mod A mod B into sin theta. Clear guys? So see here, if I talk about A cross B, okay, A cross B. What was this value? This value was equals to mod A mod B into sin theta. Clear guys? देखो यहाँ पे n cap मैं नहीं राइट डाउन कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट डाउन n cap at each and every time. क्लियर? वो अंडरस्टूड है. तो इन जनरल जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा, आई विल सिंपली राइट डाउन A क्रॉस B इक्वल्स टू mod A mod B into sin theta. क्लियर गाइस? सो सी हियर, अब देखो ये A क्रॉस B का स्टेटमेंट हो गया. नाउ सपोज इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. ओके गाइस, टेल मी इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो किस तरह के वेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं? वेरी गुड, वेरी नाइस. सो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल वेक्टर्स. आपको बताया गया था कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री. So what do you see? We have vector A as well as vector B, and the angle between the vectors equals to 0 degree. Okay. In that case, see here, cross product comes out to be A cross B equals to mod A mod B multiplied by sin 0. Okay. And what is the value of sin 0?
0 ऑब्वियसली. अरे यार ये तो सभी लोग फटाफट बता दिया करो. आई कैन सी 58 यूजर्स आर देयर. एटलीस्ट यू गाइस कैन टेल मी दिस वैल्यू. ओके राइट. सो सी हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B. यहां पे अगर हम देखते हैं तो A क्रॉस B कम्स आउट टू बी. सो इन शॉर्ट टर्म देखो अब फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपने को पता चली. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन डॉट प्रोडक्ट कि whenever you want to prove that two vectors are perpendicular to each other, or in simple words if we have vector A and vector B और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो their dot product will always be 0. क्लियर. और इन अदर वर्ड्स जब भी हमें प्रूव करना है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल करना है 0 के. क्लियर गाइस. इन द सेम वे सी हियर whenever you have two vectors and you want to prove that the vectors are parallel to each other. Okay भार्गव. Okay that's nice. भार्गव ने एक बार में बहुत सारे जीरो कर दिए. ठीक है, सबका आंसर भार्गव ने एक साथ कर दिया. ठीक है. See here, whenever you want to prove that two vectors are parallel to each other. Clear guys. आपको हमेशा क्या करना है, you are always supposed to take the cross product. क्लियर. क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करो और उसको हमें 0 कर देना है. सी लाइक दिस. ओके जस्ट कॉपी अप टू हियर, देन वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0. Yes, I cap cross I cap will be equals to 0. J cap cross J cap will also be 0, and K cap cross K cap will also be 0. Okay, that's good. Utkarsh, Bhargav, Shali, everybody is done with this. See here guys, what I am observing today, the number of users are 57 only. Okay, what about rest of the students? Okay, done. Anisha, that's good. Okay, Soumya, done. Nice. Okay guys, that's good. So see here. Okay, it's done. Everybody, that's nice. Okay, ठीक है. चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं. गैस यू कैन रिमेम्बर हमने यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखा था. क्लियर. ओके अंश, मयूर. ओके एवरीबडी इज डन विद दिस, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. गैस लुक एट द बोर्ड, सी हियर, फोकस एट द बोर्ड एंड ट्राई टू सी द सेकंड प्रॉपर्टी. व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स. ओके विंता, इट्स डन. गुड. ओके यहाँ देखो, अगर मैं यूनिट वेक्टर्स की बात करता हूँ फॉर, अच्छा एक प्रॉपर्टी यहाँ से देखो. See here in this section, if theta equals to 90 degrees, suppose if I talk about I cap cross J cap. अब यार यहाँ पे देखो I cap और okay चलो. See here, okay second property. If we take first vector A as I cap and another vector B is also I cap. So guys, I cap and I cap, sir, बाकी Netflix दे. Yes, Bhargav, you are right. I don't know what they are observing. Maybe Netflix, maybe एक और चैनल है ना अमेजन का, वो पर्टिकुलर प्राइम वीडियो, राइट. प्राइम सिस्टर तुम्हें पता है, इट मीन्स यू ऑल्सो वॉच. ओके ओके दैट्स गुड. ठीक है. वही मुझे लगा बच्चे इतने शैतान कैसे हो रहे हैं, जब शिनचैन देखेंगे तो शैतान ही होंगे. ओके दैट्स गुड. अमेजन प्राइम वीडियो. ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ओके गाइस, सो सी नहीं जनरली क्या होता था कि आई थिंक 63 और 64 स्टूडेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, बट राइट नाउ आई एम ऑब्जर्विंग ओनली 56 स्टूडेंट्स. एंड गाइस बिलीव मी, वेक्टर तुम्हारा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर तुमने एक भी लेक्चर मिस कर दिया तो आगे के टॉपिक तुम्हें कभी समझ में नहीं आएंगे. वेक्टर्स इज कॉम्प्लिकेटेड, उतनी जल्दी समझ में नहीं आता, राइट. ओके रिलैक्सा, इट्स योर फेवरेट. ओके ओके दैट्स गुड. ठीक है. ओके उत्कर्ष. ओके दैट्स राइट. ठीक है. ओके सो ऑल ऑफ यू गाइस लाइक टू वॉच शिनचैन, राइट. शिनचैन वट एवर इज हिज नेम, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा शिनचैन को. ओके मेरा भी. सर इट नाउ 56 53 एज देयर आर 3 सर. ओके ठीक है, राइट. ओके मयूरी. ओके क्रिकेट इज योर फेवरेट. ओके चलो कोई बात नहीं. ठीक है. वी ऑलरेडी नो लाइक आप सभी लोग का फेवरेट गेम कौन सा है या सीरियल कौन सा. अभी चलो एक काम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फिनिश कर लेते हैं. यस अनीशा को तारक मेहता अच्छा लगता है. दैट्स गुड. ओके ठीक है.
Okay. Okay, so see here guys, let's focus on cross product. इसको finish कर लेते हैं. Yeah, sure, Ansh, we are starting the class right now. We have two vectors, A is I cap and B is also I cap. Clear? So what you can see, these two vectors are parallel vectors. Clear guys? And if they are parallel vectors, what is the angle between them is 0 degree. So that's why if you calculate I cap cross I cap equals to mod I cap into mod I cap multiplied by sine 0. Or from here, what do you observe? I cap cross I cap comes out to be 0. See here. The first expression which we have, if we take the cross product between two same vectors, their outcome will always be 0. In the same way, we can say j cap cross j cap will also be 0. And in the same way, we can say k cap cross k cap will also be 0. Copy up to here. Minus j cap multiplied by okay, it will also be 0. So see what will happen now? If you multiply a particular number from 0, whether it's positive or negative, the outcome will always be 0. Okay. So you guys just copy up to here so that we can move forward. Okay, done. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? I cap cross I cap, J cap cross J cap, and K cap cross K cap. All of them are 0. Okay. Now let me ask you a particular question. Suppose karo sometimes they give question like this. Like, see here we have two vectors. First vector is A cross B, and second vector is B cross A. Okay, guys, try to understand. You may feel it a little bit complicated, but I hope you can understand this. And the question is, what is the angle between A cross B and B cross A? Okay. How much? Who told this? Mushfiq. Okay, 180 degrees. That is absolutely right. Okay. Mushfiq, you are absolutely right. What about the rest of the students? What is the angle between A cross B and B cross A? 180 degrees. So sometimes they ask this question as an objective question. Okay, just a minute. Yes. Okay. So always remember the angle between A cross B and B cross A would be equals to 180 degrees. Clear, guys? Okay. Okay. Yes, that's the question. See here how to find it out. First, as I told you, see here I told you this was vector B. And this is vector A. Okay. तो A cross B की पहले हम डायरेक्शन देखते हैं. A से B की तरफ टर्न करो. Thumb is pointing outside. Outside means plus K. In the same way, if you want to calculate B cross A, see here we have already done this. It's all about the direction. So अगर B cross A तुम calculate करोगे, see here the thumb is pointing inside. Inside direction is minus K. So the direction of A cross B is plus Z and the direction of B cross A is minus Z. What is the angle between plus Z and minus Z? That is equals to 180 degree. Yes, Aryan, you are right. See here, as you can see, this is your plus x axis, this is your minus x axis. Clear, guys? What is the angle between plus x and minus x? The angle between plus x and minus x comes out to be 180 degree. Guys, I hope it's clear. Okay, Disha, it's clear to you. That's good. Okay, guys. So, okay. So always remember this. I think Anisha, you are also able to understand this. Whenever you are talking about angle between A cross B and B cross A, the angle will be equals to 180 degrees. Okay. Okay, guys. Final call. Is there anyone who still has any doubt in this section? Okay, that's clear. That's clear. If anyone has, okay, good. चलो भाई, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग फटाफट आ जाते हैं बच्चों, क्योंकि हमें स्केलर और वेक्टर फटाफट फिनिश करना है. एज आई टोल्ड यू, आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स इज बेसिकली काइनेमेटिक्स, एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन JEE और नीट फ्रॉम काइनेमेटिक्स ऑनवर्ड्स. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. ओके गाइस, सी हियर हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. यस, Tanishka is trying to say something. Okay, just let me see what she is trying to say. Sir, this means cross product of two equal vectors is 0.
Yes, cross products of two vectors, not equal vectors. You can say cross product of two vectors who are present in same direction will be equals to 0. या इक्वल वेक्टर इज ऑल्सो सेम, ठीक है, इक्वल वेक्टर भी चलेगा मन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इक्वल वेक्टर्स आर बेसिकली सेम वेक्टर्स एंड इफ दे आर सेम वेक्टर्स द एंगल बिटवीन देम विल बी 0. Okay, that's good. Okay, anyone else? Just see here, Bhargav. Okay, right. Okay. I can see multiple users are typing right now. Shristi, okay, Shristi, what happened? I think it's clear to everyone. Yes, direction should be same. Shristi, see here, if both the vectors should have same direction. क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम होगी, ओनली इन दैट केस द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी इक्वल्स टू 0. क्लियर? ओके. सो सी हियर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम न्यू प्रॉपर्टीज. लेट्स से दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट वेक्टर A इज i कैप एंड सेकंड वेक्टर B इज बेसिकली j कैप. So what we are trying to do, we are trying to find out the cross product between two unit vectors which are perpendicular to each other. दो यूनिट वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अब हम उनके बीच में क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. क्लियर? सो सी हियर हाउ टू राइट डाउन. चलो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ i कैप एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ j कैप. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम गाइस? द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. ध्यान से देखो, first vector is i cap, second vector is j cap, and the angle between them is basically 90 degrees. Clear? So see here, if you do the cross product, if I write it down like this, a cross b. What is the definition of a cross b? That is equals to mod a mod b into sin theta. See here, this is the definition. A cross b equals to mod a mod b into sin theta. Okay guys? ठीक है? Now, if I substitute A equals to I cap, now see here carefully, A is I cap and B is equals to J cap. What I will write down, mod of I cap, mod of J cap, multiplied by sin 90. See here, look at the board. If I want to get, okay, yes, see, that's right. Okay, so we have I cap cross J cap, the value equals to 1. Okay, guys, as I can see the chat box, Sisti is telling me 1 and Bhargav is telling me 1. Okay, so Sisti tell me now, Aman is also telling me 1, Harsh is also telling me 1. Okay, so I can see so many students are here whose final answer is 1. Okay guys, 1. Okay, now let me ask you a question, everybody. ठीक है, I cap cross J cap equals to 1. How many of you think that this is right answer? Yes, I cap cross J cap, 60 you are telling me must be equals to K cap. Okay, what about Aman? K cap. Okay, so see here guys, I hope you are able to understand. भाई अपना इनिशियल स्टेटमेंट क्या था? आवर इनिशियल एंड बेसिक स्टेटमेंट वाज कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, आपका आंसर भी क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए. क्लियर गाइस? So see here why it's wrong. This particular expression is not right. ठीक है, this is wrong. Why it's wrong? Because you are doing cross product between two unit vectors. So answer must be present in the form of a vector itself. But as you can see, one क्या है तुम्हारा? One is a scalar. Here, try to understand. One क्या है? Scalar है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है. So that's why if you are writing down like I cap cross J cap equals to 1, this is not right. This will be treated as wrong answer. Clear? So see here how to find out the right one. इसके लिए हम use करते हैं cycle rule. And what do you understand by cycle rule? See here, I cap, J cap, K cap. Just make it like this. Okay, guys. Just make it like this. A cycle. Cycle समझते हो ना? चलाई होगी तुम लोगों ने बचपन में? Okay, okay, that's good. गिरे भी थे? Okay, okay. अच्छा ठीक है. चले भाई, यहाँ पे देखें माइनस के कैप, भार्गव इज टेलिंग माइनस के कैप. ओके, सी हियर गाइस व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है, देखो रूल इज क्वाइट सिंपल.
if you are moving along the direction of the cycle, what I am trying to say, if you are moving along the direction of the cycle, the outcome will always be positive. But if you are moving opposite to the direction of the cycle, the outcome would be negative. Clear? जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट आई कैप क्रॉस जे कैप, देखो पहले क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप, सी द डायरेक्शन ऑफ द एरोज. If you are moving along the direction of the arrows, your answer would be positive. But if you are moving against the direction of the arrows, your answer would be negative. Now see and look carefully. I cap cross j cap. यहाँ पे ध्यान दो. I cross j. थर्ड क्या बचा? K cap. Clear? And I cross j का मतलब if you are moving from I towards j, you are moving along the direction of the arrow. So that's why your answer must be positive. I cross j. तीसरा क्या बचा? K cap. So your answer should be plus K cap. Try to understand. Suppose करो. In the same way, if I want to find out j cap cross K cap, what is your answer? J cap cross I cap. Okay, right guys, right. Very good. See here, J cap cross K cap. यहाँ पे देखो J cross K अगर तुम कर रहे हो, which means you are moving from J to K. What is the third entity? That is I cap. So your final answer should be I cap. See here, J cap cross K cap, your answer comes out to be I cap. In the same way, if I take K cap cross I cap, suppose if I write it down K cap cross I cap, क्या आंसर होना चाहिए इसका? Okay, it should be minus J cap or plus J cap. No, plus J cap. Yes, Utkarsha, you are also right. Soumya, you are also right. Okay, see here guys. If I am writing down K cap cross I cap, see here. देखो यहाँ पे मैं K से जा रहा हूँ I की तरफ, तो I am moving in the direction of the arrow. Clear guys? If I am moving from K to I, so basically I am moving in the direction of the arrow. Clear guys? अगर मैं K से I की तरफ जा रहा हूँ तो third is J cap. So our answer is plus J cap. See up to here. So K cap cross I cap will be equals to plus J cap. But suppose if I change it like this. Suppose if I write it down J cap cross I cap. Not it. Minus K cap. That's right. Very good. यहाँ पे देखो अगर मैं उसके opposite जा रहा हूँ. Suppose if I am writing down like J cap cross I cap. तो J cross I, मैं एरो के अपोजिट जा रहा हूं, so my answer should be negative. So it is equals to minus I cap. Clear guys? In the same way, if I write it down like I cap cross K cap, once again, what will be the value of I cap cross K cap? Minus J cap. Very good. यार तुम लोग तो फटाफट बता दो, समझ भी जाते हो. Next देखो K cap. If I write it down K cap cross J cap, what should be final answer? Minus I cap. Okay, very good. So our final answer is minus I cap. So guys, see here, whenever you want to do cross product between I cap, J cap, J cap, K cap, or K cap, I cap, we can proceed like this. Clear? I hope all of you are able to understand this. Just let me know if you have any doubt. Okay. Okay, that's good. That's fine. See here, still if you have any doubt, just let me know. Okay, I'm just looking at the chat box guys because after this, okay, ठीक है, no doubt. Okay, that's good, very nice. So I hope all of you are ready to solve the question, right? Yes. No, it's not about yes. Right hand rule से. Okay, maybe it may be possible, but see here, Aman, right hand rule बहुत सारी चीजों का होता है, like how to find out the direction, just like you have heard about how to find out the direction of the magnetic field, वहाँ पे भी हम right hand rule का use करते हैं. Clear? तो right hand rule का जो application है वो कई सारे टॉपिक में है, वो बहुत सारा है. So if you are finding a few similarities, then it's okay, no problem at all. The thing is, you must be able to understand. That's all. Okay. Anyone else? Okay. I hope it's clear to everyone. So see here, guys, what we are doing. Okay. Up to here, it's clear to everyone. Okay. So एक काम करते हैं. Let's see our. Let me provide you a particular question.
and you guys are supposed to solve that and let me know the answer. Clear? All of you are ready? अरे भैया रेडी हो कि नहीं बता तो दो, दिया करो तुम लोग ऐसे. ओके ओके, दैट्स गुड. आधे तो सो जाते हैं मुझे लगता है. ओके, दैट्स गुड. ओके. See here. Okay, so see here, guys, I'm providing you a particular question. You are supposed to do the cross multiplication and let me know the answer. See here. We have question is like this. We have first vector A as 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. Okay. And another vector B that is equals to I cap minus j. And what you are supposed to find out? You are supposed to find out A cross B. Clear? देखो, we have two vectors. Clear guys? A is equals to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, and B is equals to I cap minus j cap. What you are supposed to find out? You are supposed to find out A cross B. ठीक है? So basically, how will you write it? You will write it like this: 2i cap plus 3j cap plus 4k cap. And cross product of I cap minus j. कैसे यार, how to solve this one? देखो क्या करना, फर्स्ट टेक 2i cap और उसका I cap और j cap के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना. देन टेक 3j cap और उसका I cap और j cap के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना. देन टेक 4k cap और उसका I cap और j cap के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना. आई होप द मैटर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक बार में एक को चूज करना है. अगर 2i cap को चूज किया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे I cap और माइनस j cap के साथ. देन यू विल चूज 3j cap, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे I cap और j cap के साथ. देन यू विल चूज 4k cap and you will take the cross product with I cap and j cap. Okay guys, just do it and let me know what is your answer. तो तुम लोग इसे क्लास में बताओगे और we can take it as a home assignment. ओके, आई थिंक ओके अमन, दैट्स वेरी नाइस यार, तुमने तो बहुत जल्दी आंसर निकाल दिया. 4i cap minus 4j cap minus 5k cap. ओके, see here we got one answer. Answer number 1, Aman. देखो, Aman got 4. Okay, let me see your answer. I cap minus 4j cap. 4i cap minus 4j cap plus 5k cap. I think this was Aman's answer. Okay. Okay, Mushfiq, you got minus 4i cap. Okay. Minus 5k cap. Okay, anyone else? Guys, we got 2. Okay, so 60. Okay, minus 4i cap. Minus 4j cap minus 5k cap. 60, it's your final answer, right? Okay, same as Mushfiq. So both of you got the same answer. Okay. Okay, Bhargav is telling me no will be different, not zero. Okay, Bhargav, I'm not able to understand what are you trying to say. Okay, guys, what about rest of the students? Yes, Anisha. Okay. So Anisha, you are having the same answer as minus 4i cap plus 4j cap minus 5k cap. That's good. Okay, Utkarsh is trying to say something. See here. Okay, so see here we got answers like देखो maximum figure तो same ही है, only plus minus sign का थोड़ा सा difference है. So let's do one thing, इसको finish कर लेते हैं and let's see which option is right, which option is wrong. Okay, see here guys, I'm going to solve this question. Multiple users are trying to write down. Okay, minus 4. Okay, Ishka is telling you minus 4 j cap I cap. Okay, Ishka, I think you have written j cap 2 times. And I'm sure, see here Ishka, I'm sure you are trying to write down like minus 4 I cap. Minus 4 I cap plus 4 j cap minus 5k cap. Okay guys, so see here, let's verify the answer. If you multiply them, देखो 2i cap का 2i cap के साथ तो 0 ही होगा. 2 times I cap cross I cap. Then minus 2 times I cap cross j cap. Then see here j cap cross I cap plus 3 times
j cap cross I cap minus 3 times j cap cross j cap, then plus 4 times k cap cross I cap. Guys, everybody just look at the board and follow me. See if you are able to understand this or not. अच्छा, यहाँ पे देखो from the property I cap cross I cap, what will be the final answer? The final answer would be 0 minus I cross j. See here in the direction of the arrow. Basically, you are moving in the direction of the arrow. I cap cross j cap, that comes out to be k cap. So this will be equals to minus 4k cap. Okay. First term हो गया, second हो गया. Then j cross I. So if you are calculating j cross I, basically guys, what you are doing, you are moving opposite to the direction of the arrow. Clear? तो अगर तुम j cross I करते हो, your answer will be minus k. So minus which one was this? Okay, j cap cross I cap. कहाँ पहुंच गए हम लोग यार? I cross I हो गया था अपना. I cross j, that is k cap. So this should be minus 2. So I cross j is k cap, minus 2k cap, plus 3 times j cross I. J cross I, that is minus k. So it will be minus 3k cap. Then minus 3 times j cross j, so this will be 0. Then 4 times k cross I. K cross I, that is plus j. Plus 4 j cap. Then k cross j. K cross j. K cross j. Opposite direction. So we will have minus I cap. So plus 4 I cap. Okay guys, I hope you have done like this. ठीक है? So what will be your final answer here? Final answer is plus 4 I cap plus 4 j cap, and here we have minus 5 k cap. Okay, I am having totally different answer. Okay guys, see everybody, 4 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap. Okay, Disha, I think congratulations, you got the right answer. That's good. Okay, everybody, just see here. Let me check it once again. 2 I cap cross 2 I cap, 0 हो गया. 2 I minus j, I cross j minus k, minus 2 k cap, then 3 j cross I. So j cross I, that is minus 3 k cap. ठीक है? And then we have done 4 k cap cross I cap. ठीक है? Whatever is the solution. Guys, our final solution is 4 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap. Okay, Bhargav, I think you got it right. That's good. That's good. Okay, that's nice. Okay, Srishti and Aman, I hope you guys got the right answer. Ishika, I get it wrong, but not. Okay, Ishika, that's fine. Yeah, Ant bola to. Okay. Okay, no. Okay, right now I hope it's clear. And see guys, I have a very good news. और वो good news क्या है कि this Sunday you have second test of IIT Point. Clear? और उसका syllabus होगा up to the covered syllabus. जहां तक भी अभी तक आपका हो चुका है up to the covered syllabus, वो उसका पूरा टेस्ट इंक्लूड रहेगा. ओके, अप टू सैटरडे. सी हियर गाइस, अप टू सैटरडे मतलब ये जो कमिंग सैटरडे है, सैटरडे तक जितना आपका सिलेबस हो जाएगा वहां तक पूरा का पूरा सिलेबस आपका संडे के टेस्ट में आएगा. ओके श्योर, दैट्स गुड, वेरी नाइस. यस सृष्टि, अप टू सैटरडे, इस कमिंग सैटरडे तक हम जितना भी कवर अप करेंगे, ऑल दैट पर्टिकुलर पोर्शन विल बी कवर्ड इन योर टेस्ट पेपर, संडे टेस्ट पेपर. सो आई होप. यस Anisha, basic mathematics also. Yes Anisha, basic mathematics plus vectors. Yes. Okay, there is another method, Amal, actually that is known as determinants method or matrix method. But we will see that particular method in next class, not in this class. Okay. Okay. So what is the important point? Important point is this Sunday you guys have test, और टेस्ट का जो सिलेबस होगा that will be up to the covered syllabus up to Saturday. Okay. So I hope guys that was all from today's side. See you in next class. Okay.
चलो एवरीबडी बाय बाय, टेक केयर। सेम टाइमिंग एज बिफोर। ओके सिस्टर, वी विल लेट यू नो द टाइमिंग्स बिकॉज टाइमिंग के लिए मैं आपको कल इन्फॉर्म कर दूंगा। व्हाट अबाउट टाइमिंग सर? सेम। ओके, आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके सिस्टर, चलो गाइस एवरीबडी बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।